Hello students, welcome to Jadesar Plus 2 Science Residential College. I am Dr. Arvind. Will discuss about different features of Java programming language. And in today's class also, at the end of this class, I will implement you how a Java program is compiled and is executed within programming implementations. And as all of you know, that in the last class we had discussed about history of Java, different naming conventions of Java, and different structure of Java programming language. So today we'll discuss different features of Java. So as you know, the primary objective of Java programming creation was to make it portable, simple and secure programming language. And apart from this, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language. And the features of Java are also known as Java buzzwords. Java जो features गुड़ाक अच्छी ताको Java buzzwords भी कहा जाए, such as simple, object oriented, portable, platform independent, secured, robust, architectural neutral, interpreted, high performance, multi-threaded, distributed and dynamic. So these are the different features of unique features of Java programming language. So we will discuss one by one. First come to simple. Simple. So why Java is called as the simple programming language? So as Java is very easy to learn and its syntax is very simple, clean and easy to understand. And according to the Sun Microsystem, Java language is a simple programming language because of, say, तुम्हें यदि C++ language जानिछ ताले Java syntax is means almost same as your C++ syntax. So in this case, in this way also you can say Java is simple. And in Java, it has removed many complicated and rarely used features. Both features, complicated features गुड़ाक Java रे remove कराई. For example, explicit pointers, operator overloading, etc. जो features गुड़ाक C++ रे थिला, किछ complicated features C++ रे थिला, ताको remove कराई. Okay, and there is no need to remove unreferenced object because there is an automatic garbage collection in Java. Unreferenced object concept थिला तुमरा C++ रे reference objects. So एठी remove कराई Java रे. Okay, because in Java there is a facility that is called automatic garbage collection in Java. Okay, so clear? Java is simple. Then next come to next property, object oriented. Object oriented. Java is a object oriented language. Everything in Java is an object, and object oriented means what? We organize our software as a combination of different types of objects that incorporates both data and behavior. Okay, so जहाँ भी हमें Java represents करछू ताको in terms of object रे ताको हमें incorporate करछू. And in object of programming language, that is a methodology that simplifies software development and maintenance by providing some rules. Object oriented methodology रे किछि rules अछि जहाँ पे ए method टा much more popularity than the other concepts. Okay, तुमर जेमि different concepts सब आगुरु थिला, procedural oriented language, structure oriented language, right? So Java is based on the object oriented language. And different features of OOPs are object oriented language programming are object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulations. एटा सब in later आमे one by one concept पढ़िबा. What is inheritance? Different types of inheritances are there. What is polymorphism? What is abstractions? So these are the unique features that are available only in object oriented programming languages, which are not available in other concepts, that is procedural oriented language. Okay, next come to next features, that is portable. So what is meant by portable? Portable means what?
as in the last class we have discussed what after compilation the Java code will be converted into what bytecode, that is dot class, and Java bytecode can be carried in any platform. So no implementation dependent features, okay, and everything related to storage is predefined. For example, the size of primitive data types. That's why Java is called as what known as the portable. Okay, in every platform it can run, right? Then come to next properties, that is platform independent. Platform independent. Okay, so what is platform independent? See, unlike other programming languages such as C and C++, which are compiled into the platform specific machines, and Java is guaranteed to be write once and run anywhere language. In the last class we had discussed, but Java is such a language which can define in this way, that is write once and run anywhere language, and on compilation Java program is compiled into bytecode as we have discussed previously, and this bytecode is platform independent and can be run on any machine. Plus this bytecode format also provide security, and any machine with Java runtime environment can run Java programs. That's why Java is known as platform independent. That is another unique features of Java. Next, secured. What is secured? Why Java is known as secure programming language? Okay, because Java is always the first choice when it comes the concept of security. That is, with the Java secure features, it enables us to develop virus-free, tamper-free systems, and the Java programs always run in Java runtime environment with almost null interaction with system operating system, and it is more secure. That's why Java is known as secure programming language. Okay, and next properties or next features, that is multi-threaded. That is multi-threaded. Multi-threaded means what? It makes the Java program possible to write the program that can do many tasks simultaneously, and benefit of this concept is that it utilizes the same memory and other resources to execute multiple threads at the same times, like while typing grammatical errors or checking error. Okay, means multi-threading means what? Simultaneously it can perform many tasks or many functions. That's why it is called the multi-threading. माने तुम जतबेले प्रोग्रामटा लेखुथबो सेतबेले भी से साइमल्टेनियसली ग्रामेटिकल एररटा चेक करथबो. दैट इज कॉल्ड द मल्टी-थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स. किंतु प्रीवियस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कोन थला वन बाय वन गोटे टास्क कर साला परे जाके सेकंड टास्क को से जीवो. बट जावा इज बेस्ड ऑन द मल्टी-थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. Architecture neutral, that is, as you know, the compiler generates bytes codes. Okay, in the previous class we have discussed after compilation your .java file will be converted into .class. That is what .class contains the bytecode and which have nothing to do with particular computer architecture. Hence, Java program is easy to interpret on any machines. Okay, that's why architecture neutral. Okay, that means what? Once you convert the .java to .class file means what? It can run on any machine. So for that we need only a interpreter. Okay. Next, high performance. High performance. Okay. So Java, as you know, Java is an interpreted language. So it will never be as fast as compiled language like C or C++. Okay, but Java enables high performance with the use of just in time compiler. Okay, just in time compiler. That's why it will give you the high performance. Okay, so Java ago class भी कही Java is such a language where both the compiler and interpreter is present. Okay, so first
the dot Java file will be converted into dot class by the help of a compiler, and then from dot class to dot exe there is no need of compiler. It requires only a interpreter, that is Java virtual machine, to interpret the dot class file to dot exe. Okay, so that's why Java programming language is having high performance than the other programming languages. Okay, so now come to next features, that is distributed. That is distributed. Java programming supports the characteristics of distributed. That is, Java is means the program can be designed to run on computer networks. Okay, and Java is a special class library for communicating using TCP/IP protocols. Whatever the networking रे जो language सब यूज करूँ सेटा सब जावा language कि कौन पाई जावा रे एक concept अच्छी माने गोटे कंप्यूटर रु आगोटे कंप्यूटर को आमे डिस्ट्रीब्यूटिंग वे रे मेसेज टा ट्रांसफर कर परिबा, एंड क्रिएटिंग नेटवर्क कनेक्शन इज वेरी मच इजी इन जावा एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, एंड जावा रे सब से सब फंक्शंस एंड concepts are available to make a computer network, distributed computer network. And the last one, that is dynamic. Java is dynamic language because it supports dynamic loading of classes. It means classes are loaded on demand basis रे classes को load करा जियो, and it also supports functions from its native language, that is C and C++. And Java supports dynamic compilation and automatic memory management, that is called the garbage collection, and this property is not available in C and C++. Okay, dynamic means what? जते बेले चाहिबो से जो फंक्शन चाहिबो से ऑटोमेटिकली ताको लोड करियो, आगो आमे ताको लोड करके रखिया दरकार नै. ओके, सो these are the beautiful features available in Java programming language, that is simple, object oriented, portable, platform independent, secure, multi-threaded, architectural neutral, high performance, distributed and dynamic. Okay, so let us now discuss how main string args. Okay, then system, it is S टा capital, then it is system dot out dot println, एठी आमे लिखिबा कोन वेलकम. ओके, ए कर्ली ब्रेसेस रे एंटा एठी कली, ए कर्ली ब्रेसेस रे एंटा एठी कली. एटा तो प्रोग्राम मु लिखि देली, राइट. आकु मु सेव करबी कोन ना रे सेव होबो, एटा hello.java, hello.java जो ना रे मु क्लास फाइल टा क्रिएट करथिली, नाम देछि सेही ना रे जावा टा को मु क्रिएट करी. तापर मु कन करबी एक्चुअली, सो ताको कंपाइल करबी. कंपाइल पई कोन जावा सी फाइल नेम hello.java टाइप करबी कोंडी कमांड प्रॉम्प्ट रे, राइट. टाइप कर साला परे इफ देयर इज नो एरर्स, if there is no syntax errors, then Java file name Java hello. Okay, and then we can see the outputs. Okay, so to see this practically, simply see the implementations. Hello student, welcome to the implementation part. That is, in this implementation we are going to write a program that is to display welcome. Okay, so you can select any editor for the Java programming, but for you it will be better if you select the Notepad. Okay, so Notepad editor रे simple program टा में लिखिवा. first line हमर कोन था command statement, that is to display the message welcome. Okay, next हमर कोन थला import java.io.star.
राइट सो इंपोर्ट कला परे आमे कोन डिक्लेयर करथिले क्लास हेलो सपोज सो ए क्लास नाम अनुसार हमर फाइल नामटा हो एंड देन पब्लिक स्टैटिक void main राइट string स्ट्रिंग रे s टा कैपिटल नंबर रहइबो args ए स्टेटमेंट हम कहितली एटा होची डिफॉल्ट स्टेटमेंट सब प्रोग्राम रे रहइबो तो स्टार्टिंग कला देन system.out.println एठी s टा भी कैपिटल रहइबो system.out.println here वेलकम राइट सेमिकोलन सब स्टेटमेंट जावा रे सब स्टेटमेंट सेमिकोलन रे एंड हो राइट एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देखो दुईटा कर्ली ब्रेसेस हमर गोटे कर्ली ब्रेसेस एटा थिला ता पई एटा एंड करली आ गोटे कर्ली ब्रेसेस हमर एटा थिला ता पई मु एटा एंड करली राइट सो लिखि सरला परे हमर मेन काम होजी कोन ताको सेव करिया जे कोनसी फोल्डर रे तुमे सेव करि परिबो EDC जे कौन सी फोल्डर सपोज मुझे सिलेक्ट करबी ई फोल्डर ओके ई फोल्डर रे तुम गोटे फोल्डर नाम पुणी अगेन दब सपोज मु फोल्डर नाम देली ना टुडे ओके टुडे इनसाइड टुडे यू सेव द फाइल इन द नेम ऑफ hello hello hello.java extension and here all files right ऑल फाइल्स करिवो देखि सेव करियो तो हमर फाइलटा बर्तन कहा भीतर सेव हला ई फोल्डर भितरे सब फोल्डर क्रिएट कलु टुडे भितरे हमर प्रोग्रामटा नाम सेव हला जावा hello.java नेक्स्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट रे फर्स्ट ई फोल्डर को जीवो ई फोल्डर राइट ई फोल्डर भितरे हमर कोन थिला फोल्डर सब फोल्डर नाम हला टुडे ताले cd टुडे राइट देन देखो आ भीतर डायरेक्टरी मारले तुम देख परियो गुटिए फाइल अछि दैट इज hello.java ओके ताले बर्तन मु कंपाइल करे पे कोन करबी java c फाइल नेम hello.java राइट कंपाइल इट देखो नो एरर्स आर देयर देन java फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन सपोज hello ओके देखो मोर आउटपुट आसीला वेलकम राइट सपोज देखो मु आम गोटे एरर क्रिएट करके देखिबा जे प्रोग्राम रे एरर आसला हमर केमती मेसेज आछ सपोज मु सिस्टम रे y टा मु छाड़ देली सपोज राइट sy टा मु छाड़ देली ताको सेव करिवो देन कमांड प्रॉम्प्ट को जीवो एठी java c फाइल नेम hello.java ओके देखो जो लाइन रे एरर थिबो सेही लाइन रे मोर कैरेट सिंबल देखो देखे दूची ए लाइन रे से एटी लेखो देखो पैकेज SSTM डज नॉट एग्जिस्ट ता माने से SSTM किछि पाउनी से ओके माने किछि मेथड से पाउनी तो से एरर देखौची तो आकु डिबग करिया पे हेले देखो यदि एरर न थांता ताले मोर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट आस्थांता आकु डिबग करिया पे हेले अगेन मु देबी पुनी नोटपैड को सेठी करेक्शन करबी अगेन सेव करबी एंड नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट को आसीबी अगेन कंपाइल करबी तक java c फाइल नेम hello.java देखो बर्तन किसी एरर नहीं बर्तन java फाइल नेम hello okay so this is all about here compilation and execution of a simple java program. Thank you. Now we'll discuss another example, that is to find out the sum of two numbers suppose, right? So the same style comment statement, that is sum of two numbers, right? So import java.io.start, right? Package declaration, then class sum, your class name, then same style public static void main string args, okay, curly braces start.
पब्लिक स्टैटिक भॉइड मेन कौन पर लिखा हो मु लास्ट क्लास रे कही से वीडियो लेक्चर को रेफर करदेव राइट एटा कंपलसरी ओके देन देख सम ऑफ टू नंबर्स दीटा नंबर्स रे सम बाहर करवा सो फास्ट मु डिक्लेयर करी इंट ए मु डायरेक्टली डिक्लेयर कर दूची ए इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 राइट एंड देन एड अनदर वेरिएबल राइट देख आम वेरिएबल कौन टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन आम सब डिटेल्स आसवा डाटा टाइप्स कौन सब जाभार आसवा आम पर ये खाली गोटे प्रिलिमिनारी आइडिया मुझे दूसरी सी एटी जो इंट डिक्लेयर कराऊँ दिस इज ए डाटा टाइप एंड ए इक्वल टू 5 जो कर दूची एटा कांस्टेंट हो राइट एंड एड जो कर दूची एटा वेरिएबल हो वेरिएबल मीन्स व्हाट द वैल्यू वेरीज टाइम टू टाइम सो एड किसी स्पेसिफिक वैल्यू ना जो वैल्यूटा आम आसाइन करेंगे से ऑटोमेटिकली से आसाइन हो बट ए आउ बी दिस टू आर नोन एज द कन्स्टान्ट्स बिकज आम ऑलरेडी ये वैल्यू आसाइन कर दोचे दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज द कन्स्टान्ट्स सो कन्स्टान्ट्स कौन वेरिएबल्स कौन डाटा टाइप्स कौन इन डिटेल्स आम नेक्स्ट लेक्चर्स रे आम आसवा राइट देन सिंपल एड इक्वल टू ए प्लस बी दुटा नंबर्स को मुझे ऐड करदेली बस एडिशन पर मोर काम कौन ताको डिस्प्ले करी डिस्प्ले लास्ट प्रोग्राम रे पढ़ते कौन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन राइट ये लिखिदेव द रिजल्ट इज ओके प्लस एड ये प्लस कौन पे लिखा प्लस लिखा कौन पे एड रो जो वैल्यूटा ये आम कैलकुलेशन कलु एड रू से वैल्यूटा रिट्राइव करके से देखे राइट सो ये कर्ली ब्रेसेस एंड है ये कर्ली ब्रेसेस एंड है तो मोर आउटपुटा कौन आसो ये जो मुझे कंपाइल और एग्जीक्यूट करी मोर आउटपुटा आसो द रिजल्ट इज ये 6 + 5 इज 11 राइट तो वेरी सिंपल so see the implementation so hello student come to the implementation of the second program that is a sum of two numbers the same method you have to follow here the command statement to find sum of two numbers okay and import java.io.star okay and then class suppose my class name is sum right and then public static void main string args जैसे मुझे कही सब प्रोग्राम रे फंक्शन टा निहाते लिखियो public static void main okay and then here you have to declare say sum of two numbers means you have to declare two variables that is a suppose a is a variable and directly I am assigning the value suppose a equal to 6 and b equal to 7 right and then add another variable okay see in this case so later we will discuss what is int what is here int is a data type right and a and b are the two constants okay and a is a add is a variable as we are assigning the values that's why these are the constants so next video lectures रे हम पढ़िबा constants कौन data types कौन java variables कौन right so बर्तमान खाली गोटे प्रिलिमिनारी आइडिया गोटे रखिता माइंड रे तापर हम कौन करबा add equal to a plus b राइट तापर ताको डिस्प्ले करबा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन राइट द रिजल्ट इज अठी प्लस एड राइट प्लस एड जो लिखा हो तार मीनिंग होची एड रे जो वैल्यूटा ताको रिट्राइव करके से एडी देखे राइट देन सेमीकोलन देन कर्ली ब्रेसेस एंड राइट देन सही सेम स्टाइल आपको सेव करबा में सेव एज से टुडे भितरे सपोज मु देली एटा सम बिकॉज मोर क्लास नाम थिला सम सो सम डॉट जावा एट ऑल फाइल्स कर दबा राइट सो
सेव सेव हो गला का भितर टुडे भितर देन बर्तमान देख जावा सी मोर फाइल नाम थिला कौन सम डॉट जावा देख कंपाइल कर किसी एरर नहीं देन एग्जीक्यूशन जावा फाइल नाम सम see the result is 13. So very simple. Okay, thank you. Clear students? So what we have discussed in today's class, different features of Java programming language and different programming examples and how to compile and execute the Java programs in the Java softwares. Okay, so आमे ये सब तो आज क्लियर हेलु जदि तुमर किछि डाउट्स थिबो ताले तुमर कमेंट्स और सजेशंस किछि तुमे पठेकी लेखिकी दे परिबो मोर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है ओके सो किछि भी डाउट्स अछि नाले हमें जूम क्लास रे ताको क्लियर करिवा सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू ऑल बाय बाय।